Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal to everyone. I, Sakshi Kilawat, back again with PT 365. We were discussing issues related to the Constitution. In this video, we'll learn about right to protest. Recently, the Supreme Court observed that right to protest of farmers should not hinder traffic or public movement. रिसेंटली हमने देखा था फार्मर्स का प्रोटेस्ट पंजाब से लेके दिल्ली तक. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि ऐसा प्रोटेस्ट ट्रैफिक या पब्लिक मूवमेंट को हिंडर या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. राइट टू प्रोटेस्ट किस आर्टिकल में आता है, वो क्या है, चलो देखते हैं. इट कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए and 19 clause 1 subclause B. The right to protest is a fundamental right. It allows people to assemble without arms and express their views through peaceful protest, strengthening India's democracy by holding government accountable and raise voice against misuse of power. ये आर्टिकल पीपल को असेंबल करने की तो परमिशन देता है, राइट तो देता है, बट विदाउट आर्म्स, एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज पीसफुली विद पीसफुल प्रोटेस्ट, जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की डेमोक्रेसी को बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल. ऑब्वियसली गवर्नमेंट पीपल सिलेक्ट करती, पीपल इलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी. And it can raise voice against misuse of power, but it is not absolute right under article 19 clause 2 and clause 3. It is subject to reasonable restrictions. चलो हम लोग पूरा आर्टिकल 19 ही देखते हैं. 19 का clause 1 और clause 2. Article 19 titled Protection of Certain Rights Regarding Freedom of Speech. According to Article 19, Clause 1, all citizens shall have the right. ये नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे पीपल या कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा है ऑल सिटीजन्स, यानी कि ये इंडियन की बात कर रहा है. ये राइट किसी और को नहीं है, नॉन इंडियंस को नहीं है, जस्ट टू इंडियंस. All citizens shall have the right, subclause A, to freedom of speech and expression, B, to assemble peaceably without arms, C, to form associations or unions or cooperatives, D, to move freely throughout the territory of India, E, to reside and settle in any parts of the territory of India. F डिलीट किया था, जो था the right to acquire property. This was omitted by the 44th Amendment Act of 1978. And G, the last one, is to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. तो अभी हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 clause 1 subclause A of the Indian Constitution says that all citizens have the right to freedom of speech and expression. This means the right to express one's own convictions and opinions freely by words of mouth, writing, printing, pictures on any other mode. Through या फिर words through mouth, या फिर writing, printing, या किसी picture या कोई और mode से, किसी और तरह से, every Indian citizen can express their convictions and opinions freely in this India. Preamble also provides for securing to all citizens liberty of thought and expression. Preamble में भी दिया है, if you remember the preamble,
It provides securing all citizen liberty of thought and expression. Freedom of speech is guaranteed not only by the constitution but also by various international conventions. कौन से conventions है? Let's see. Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, और भी है बहुत सारे. The freedom is essential. Supreme Court का कहना है, Supreme Court has held that freedom of speech is the bulwark of democratic government. Bulwark यानी कि buffer. It is a buffer or defensive wall of democratic government. This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process. Democratic process की proper functioning होने के लिए ये freedom जरूरी है. Freedom of speech and expression is regarded as the first condition of liberty. It is the mother of all liberties. आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है, बट अगर आपको बोलने की ही फ्रीडम नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है, तो वो आजादी ही क्या काम. In the Maneka Gandhi case, the Supreme Court held that democracy is based essentially on free debate and open discussion. For that is the only corrective of government action in a democratic setup. Democracy मतलब government of the people, by the people, और अभी for the people. It is obvious that every citizen must be entitled to participate in the democratic process, and in order to enable him to intelligently exercise his right of making a choice, free and general discussion of public matters is absolutely essential. Democracy का मतलब government for the government of the people, by the people, for the people. अगर ये government of the people है, for the people है और by the people है, तो people का इसमें involvement होना बहुत जरूरी है. और people तभी इन्वॉल्व हो सकते हैं जब उनके पास राइट हो टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में बहुत सारे हैं. राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, फ्रीडम ऑफ प्रेस. अभी नहीं देखेंगे हम लोग ये. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19(2) में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं. यही था ना सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे थे शुड नॉट हिंडर ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट, तो ये इसी के अंडर आता है. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 provides that this right is not absolute. This right यानी कि freedom of speech and expression, it is not absolute and reasonable restrictions may be imposed on the exercise of this right for certain purposes. किसी purposes के लिए ये rights के ऊपर reasonable restrictions लग सकते हैं. और किस interest में लगेंगे, चलो देखते हैं इसको. The first one is security of state. The security of state may be endangered by crimes of violence intended to overthrow the government, waging war and rebellion against the government, external aggression or war. ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है. अगर कोई क्राइम करके या वायलेंस करके गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है या रिबेल करना चाहता है, तो उसका मतलब वो एक्सप्रेस करके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के थ्रू इस राइट के अंडर अगर कोई वायलेंस क्रिएट करना चाहता है या गवर्नमेंट को ओवरथ्रो और रेबेल करना चाहता है, तो उसका ये राइट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. एवरी पब्लिक डिसऑर्डर कैन नॉट अमाउंट टू बी रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग और द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया.
the words in the interest of the security of the state implies that the actual result of the act is immaterial. Thus, acts which may indirectly bring about an overthrow of the state would come within the expression. जो भी एक्ट्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो स्टेट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है तो वो इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर आते हैं. सेकेंड इज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट. ये ग्राउंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया था. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोहिबिट unrestrained malicious propaganda against a foreign state. किसी भी फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई malicious propaganda रखते हैं तो this may affect the maintenance of good relations with that state. Third one is public order. ये भी ग्राउंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था. Public order term which is synonymous with public peace, safety and tranquility. Or the test for determining whether an act affects public order or not is to see whether it leads to the disturbances of the current of life of the community so as to amount to a disturbance of public order or it merely affects an individual. Public order मतलब लार्ज या फिर मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो तो ही वो पब्लिक ऑर्डर के अंडर आता है. किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर कोई भी अपना मतलब कुछ भी बोल के चला जाता है और सिर्फ एक पर्सन को किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है तो वो पब्लिक ऑर्डर नहीं कहा जाता, वो किसी और इसमें के अंडर कवर किया जाए. Fourth one is decency or morality. The freedom of speech and expression can be curtailed on the ground of being against decency or morality. Section 292 to 294 of the IPC provides instances of restrictions on the freedom of speech and expression in the interest of decency and morality. It prohibits the sale or distribution or exhibition of literature which have obscene words. Literature जिसमें obscene words होंगे उसका sale, distribution या exhibition को provide करता है, prohibit करता है under decency और morality के ground पे. Fifth one is contempt of court. This can be imposed if it exceeds the reasonable and fair limit and amounts to the contempt of court. Under the Contempt of Court Act 1971, contempt of court may be either civil or criminal. Civil contempt में क्या आता है? Any willful disobedience to any judgment, decree, order, process or writ. और criminal contempt में क्या आता है? ऐसे acts जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज या लोअर करने की कोशिश करता है या फिर prejudices or interferes with the due course of any judicial proceeding or it interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. Sixth ground is defamation. Any statement which adversely affects a man's reputation amounts to defamation. जो पब्लिक ऑर्डर में देखा था ना कि वो एक्ट मेयरली इंडिविजुअल को अगर अफेक्ट करता है तो वही मेयरली इंडिविजुअल का रेपुटेशन जो डाउन होता है ये डिफेमेशन ग्राउंड पे मतलब इसी के अंडर कवर होता है. Any statement which adversely affects a man's reputation which amounts to defamation. Freedom of speech does not empower a person to hurt the reputation of the another person. आपको फ्रीडम मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और किसी भी पर्सन के रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश करो. Defamation affects a person's reputation in society and is a punishable offense under IPC as well as a civil wrong.
The Supreme Court has upheld the constitutional validity of criminal defamation law. Criminal defamation law जो है वो constitutionally valid है, ये Supreme Court ने कहा है. Saying the right to free speech was not an absolute right. This means individuals and media organizations, including social media platforms, can be prosecuted for defaming somebody. मीडिया में भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब कोई आर्टिकल छाप देते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, मोस्टली एक्टर्स के या पॉलिटिशियंस के केसेस में दिखता है, तो वो डिफेमेशन के अंडर पनिशेबल है. द सुप्रीम कोर्ट इन Subramaniam Swamy versus Union of India case 2016 said there was nothing wrong with the section 499 and 500 of the IPC, जो प्रिस्क्राइब करता है 2 year jail term maximum and fine. Defamation is a reasonable restriction on free speech prescribed under the Constitution. Seventh ground है, seventh restriction is incitement to an offense. ये भी ग्राउंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के अंदर ऐड किया था. कौन से किए थे फर्स्ट अमेंडमेंट में? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, और ये अभी का इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. The freedom of speech and expression does not give license to incite people to commit an offense. Let's move to the eighth ground of restriction, that is section 124A of the IPC, which is sedition. और ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही बहुत अच्छे से देखा है. We will move forward to the ninth, that is integrity and sovereignty of India. इसको 16th Amendment Act of 1963 में 3 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. Under this clause, freedom of speech and expression can be restricted so as not to permit anyone to challenge the integrity or sovereignty of India, to preach cession of any part of India from the Union. Cession मतलब ये parting वाला section है. To remove or to separate the part from Union of the India. We will move to freedom of assembly, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में आता है. Article 19 clause 1 clause B recognizes and guarantees the freedom of assembly. In order to claim this right, the assembly of people has to be peaceful and without arms. Constitution के आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ असेंबली guarantees or it is recognized and guaranteed the freedom of assembly under the constitution, but दो conditions है, वो peaceful होनी चाहिए और when you are assembling तो आपके पास arms नहीं होने चाहिए. Arms and ammunitions are prohibited. The state may further impose reasonable restriction in the interest of public order and sovereignty and integrity of India. It is nowadays widely known that the magistrate can put reasonable temporary restriction on the freedom of assembly of citizens under section 144 of CRPC to prevent an imminent threat to public order or peace. सेक्शन 144 से तो सब लोग फैमिलियर हो ही गए हैं कोविड टाइम में. इसी को हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कर्फ्यू भी कहते हैं, जो मतलब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते, परमानेंट नहीं बट टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन ही कैन पुट.
The freedom of assembly gives people the right to hold public meetings and take out processions, but it does not mean that citizen can hold a public meeting on anybody's property. इस राइट के अंदर एक और राइट है जो मतलब पीपल कैन होल्ड पब्लिक मीटिंग्स वो लोग ले सकते हैं और जिसे हम लोग रैली या यात्रा भी कहते हैं वो भी निकाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक मीटिंग किसी के भी प्रॉपर्टी पे, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर ले. The government can impose restriction if such meetings or processions disturb the road traffic or peace in restricted areas. रोड ट्रैफिक को, पीस को, जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में पीस है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए अगर प्रोसेशन निकलता है तो इट इज अलाउड, ये आपका राइट है. बट अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो इसको प्रोहिबिट किया जा सकता है. Picketing and demonstrations are considered a part of freedom to form an assembly. पिकेटिंग मतलब धरना देना, जो धरना दे मतलब गवर्नमेंट के किसी लॉ, कोई एक्ट या कोई लॉ नहीं अच्छा लगता है, नहीं एग्री करते हैं पीपल, तो उसके लिए धरना देते हैं. बहुत बार हम लोग ने देखा है, जैसे कि लोकपाल बिल में भी हुआ था अन्ना हजारे वाला केस. So this is considered a part of freedom to form an assembly. Demonstrations and processions usually involve three fundamental rights. First one, that is freedom of speech. Second, freedom of assembly. And third, that is freedom of movement. Picketing and demonstrations can be regarded as forms of freedom of speech and expression. They are non-violent acts of persuasion. The right to make peaceful demonstration or taking out a procession or holding out banners or arranging a public meeting, etc., are democratic rights which the Constitution of India has recognized with reasonable restrictions. Violent protest is not a basic right. सुप्रीम कोर्ट का कहना है that violent protests are not covered under fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने ये तब कहा था while listening the plea of गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लीडर बिमल गुरुंग. Mr. Gurung has asked for protection against arrest in several cases filed against him by the West Bengal government for violent unrest in the Darjeeling Hills. In this case, Supreme Court observed that the reason for the demonstration might be genuine. आपका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो जेन्यून हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है that agitators has the license to resort to violence, destroying property and at times endangering lives of citizens. बहुत बार देखते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट बसेस जलाई जाती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो ये फ्रीडम आपका बेसिक राइट नहीं है. Violent demonstrations are not covered under the fundamental right to free speech and expression or the fundamental right to assemble peacefully. Constitution only provides for the right to assemble peacefully. आप assemble हो रहे हो अच्छी बात है, but peacefully होना चाहिए. अगर peace disturb होता है तो वो right आपको नहीं मिलेगा. The court referred to the Kerala High Court judgment on bans to evoke the judicial objection against methods used by particular groups or parties or sects to paralyze the entire citizenry. Demonstrations, whether political, religious, or social, or other demonstrations which create public disturbances
or operate as nuances or create or manifestly threaten some tangible public or private mischief. These are not covered by protection under Article 19 Clause 1, that is free speech. डेमोन्स्ट्रेशन जो पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल या कोई और भी हो, अगर वो पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, न्यूआंस क्रिएट करता है या किसी पब्लिक को थ्रेटन करता है या फिर प्राइवेट मिसचिफ क्रिएट करता है, तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर कवर नहीं होगा. Likewise, it held that the right to free speech includes the right to speak in public. राइट टू फ्री स्पीच के अंदर राइट टू स्पीक इन पब्लिक भी आता है, बट दिस टू शुड नॉट बी यूज्ड टू इंसाइट वायलेंस. अगर ये राइट वायलेंस इंसाइट करने के लिए यूज होता है तो ये राइट टू फ्री स्पीच के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया है 19(1) और 19(2) जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है. So I think that's all for now. Yeah, that's all for now. We'll meet in another video. Have a good day, guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Happy summer.